Good evening, dear students. Welcome to matrixdigilearn. And today we'll discuss about the computer awareness. The questions are on your screen. The first question for you: which of the following topology has the highest reliability? एमानक भितरु को टोपोलॉजी रो रिलायबिलिटी होचे सबुठारु अधिक. The options are star topology, option B box topology, option C ring topology, option D mesh topology, option B none of these. Which option is the right answer? The right answer is the mesh topology has the highest reliability. Mesh topology means all the topologies are connected with a hierarchical manner. अनेक गुडे टोपोलॉजी को बहुत बंच आकार एठी कनेक्शन करा जाय मेश टोपोलॉजी रे शो आर रिलायबिलिटी होची सबुठारो अधिक. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू: व्हिच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर unauthorized copying of software to be used for personal gain instead of personal backup? एमानक भितरु को टर्म टाकू यूज करा जाय गोटे अनऑथराइज्ड बा इलीगली भाबे कॉपी करिबा पई सॉफ्टवेयर को जहा कि निजस्व बेनिफिट पई यूज करा जाय. ऑप्शंस ए प्रोग्राम थीवेरी, डाटा स्नैचिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, program looting, data looting. Which option is the right answer? The option C is the right answer. That is the software piracy. Software piracy रे कोनोसी लीगलिटी न थाई बा कोनोसी ऑथराइजेशन न थाई आमे कोनोसी सॉफ्टवेयर को कॉपी करि थो जहा कि साइबर लॉ अनुसार गोटे क्राइम बोली कुहा जाय. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू: 8-bit code can support how many differentiation of characters? 8-bit code रे हम तीन प्रकार कोड अछि. गोटेला BCD कोड, गोटेला ASCII कोड, गोटेला 8-bit कोड. तो 8-bit कोड रे हम जो यूज करा जाय किते प्रकार वे रे प्रेजेंट करा जाय पारे. Anyone can give the right answer? The right answer is 256. 256 फॉर्मेट रे बा 200 प्रकार वे रे आमे कैरेक्टर डा को रिप्रेजेंटेशन करि परिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू: द मेन वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट इज आल्सो नोन एज. वेरी सिंपल क्वेश्चन. गोटे वेब पेज रो मुख्य पेज बा गोटे वेबसाइट रो मुख्य पेज को आमे कोन बोली कहिताउ? कंटेंट्स पेज, होम पेज, introduction page, fast page, and icebreaker page. Anyone can give the right answer? The option B is the right answer. That is known as the home page. प्रत्येक वेबसाइट रो गोटे मूल पेज थाए बा प्रत्येक वेबसाइट रो गोटे मेन पेज थाए जहा दिरे कि साधारणतः से ऑर्गेनाइजेशन रो नाटा कोन जणा पडुथे जहार वेबसाइट थाए अनेक गुडा हाइलाइटेड बटन्स, पिक्चर्स एवडा सब देखाउथे. साधारणतः आमे जेतबले कोनोसी वेबसाइट को ओपन करूचे कॉमनली से तार वेब पेज मुख्य पेज को नै जाय बा होम पेज को नै जाय. सो द मेन पेज ऑफ ए वेबसाइट इज नोन एज होम पेज. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, होम पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू: व्हाट इज हाइपरलिंक? आमे हाइपरलिंक रो यूज करिथाउ तो डॉक्यूमेंट रे आमे देखिथाउ अनेक गुडा जिंस रो लिंक रखिथाउ. तो से हाइपरलिंक रो माने कोन? ऑप्शंस आर: इट इज ए टेक्स्ट और image that you can click on to jump to a new document or page. It is an input type for multimedia files. It is a collection or directory of web pages. It is the home page of a site. None of the above. Hyperlink कहले हमको कोन बुझिबा को पड़े? आमे एटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे भी यूज करू. खाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नो, बेसिकली इंटरनेट रे तो अधिक हाइपरलिंक ही देखिया को मिले जहापुर को
आमे जतले माउस पॉइंटर नहीं जाऊ जदि केबे ब्राउजिंग करथिबा कंप्यूटर रे साधारणतः सेटा गोटे हैंड आइकन को चेंज हो जाए बा गोटे आंगुठी चिन्ह को एमते चेंज हो जाए तो सेई जो हाइपरलिंक रो आ भितर को टर्म सहित रिलेटेड अछि बा या भितर को टर्म ताको से फुलफिलमेंट करूछि anyone can give the right answer the option A is the right answer it is a text or image that you can click on to jump to a new document or page ताले ये कौन करी थाए ना गोटे नुआ पेज को बा नुआ डॉक्यूमेंट भितर को हमको नहीं जाई थाए जोटा कि हमर लिंक थाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज द टेक्निक यूज्ड टू गेन unauthorized access to computers whereby the intruder sends messages to a computer with an address indicating that the message is coming from a trusted host माने जोटा हमें कहता साधारणतः ये टिके शॉर्ट टाइप रो कहि थाए बा जोटा को टिके कहंती हमर कोन स्पेशली इंपोर्टेंस दे कि ताको ट्रांसफर करि थाए तो से जे टर्म क्षेत्र होस्टिंग बोली भी कहा जाए तो ये जो कहा जाए जे गोटे टेक्निक जहा कि अनऑथराइज्ड एक्सेस हमर ऑथराइजेशन नथिबो हमें एक्सेस नहीं जिबा कोन से कंप्यूटर ऊपर बा ताको चले देई परिबा एबो मेसेज ताको एमिति सेंड करिबा से अननोन सोर्स रु तो से जो अननोन सोर्स रो मेसेज ता ताकू लागिबो कि ए मेसेज ता होचे ओटा ट्रस्टेड सोर्स बा से जानि छि जहा को बा जो वेबसाइट विषय जानि छि से थ्रू ए मेसेज ता आसी छि ताकू एक्चुअली से टर्म ताको कोन बोली कहंती आइडेंटिटी थेफ्ट फॉर्गिंग आईपी स्पूफिंग हार्मिंग एंड फिशिंग व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर कैन एनीवन गिव द राइट आंसर एमानक भितर को टर्म टा हमर एथि पई कि यूज करा जाय के आंसर दे परिबो द राइट आंसर इज स्पूफिंग तो सेटा को एक्चुअली आईपी स्पूफिंग बोली कहंती बा इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पूफिंग बोली कहंती नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप मो अनेक समय भी एमती किछि डिस्कशन गोटे करिथिबी एंड कहिथिबी भी पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप कंप्यूटर क्षेत्र रे बेसिकली हिंट्स कहि दोछि डॉक्यूमेंट क्षेत्र रे भी यूज करा जाय तो एटा एक्चुअली कोन गोटे पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन बी पेज लेआउट पेज साइज पेज व्यू नॉन ऑफ द अबव पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप बेसिकली ए दुईटा कोन एनीवन कैन गिव द राइट आंसर you may type the messages by chat the right answer is option A page orientation हमर जतबे पेपर साइज रो प्रिंटिंग पाई सेटिंग करा जाए तो प्रिंटिंग पाई सेटिंग कला बळे हमको बहुत जिंस देखिबा को पड़े पेपर साइज देखिबा को पड़े पेपर रो लेआउट देखिबा को पड़े पेपर रो मार्जिन देखिबा को पड़े ए सब जिंस ओडा को देखिबा को पड़े तो से जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स भितरे मते दुईटा ऑप्शन मिली थाए जोटा पेज ओरिएंटेशन ताधरे पोर्ट्रेट मिली थाए एंड लैंडस्केप मिली थाए पोर्ट्रेट माने पेज को जदी लंबा अधिका ओसार कम पटिया बाहर करिया को चाहूतिबा एंड लैंडस्केप माने जदी पेज रो ओसार अधिका एवं लंबा कम देई बाहर करिया को चाहूतिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर द वायर्स ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क is provided by internet access by transmitting digital data over the wire of a local telephone network is provided by options are list line digital subscriber line digital signal line modem none of these which option is the right answer anyone can give the right answer ताकू एक्चुअली डीएसएल बोली कहंती बा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहंती हमर इंटरनेट कनेक्शन बड़े वेरियस मेथड यूज करा जाय डायरेक्ट कनेक्शन डायलॉग कनेक्शन डीएसएल कनेक्शन तो जहा भी हो तो ए जो टर्म पाए लोकल टेलीफोन नेटवर्क सहित जोटा हम पाई थाउ सेटा को बेसिकली हमें डीएसएल बा जोटा कहंती डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोली कहंती नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू which of the following network devices is called a concentration
तो एमानक भितरु को नेटवर्क डिवाइस टाकू गोटे कंसंट्रेशन बोली कहा जाए बा कंसंट्रेटर बोली कहा जाए माने जहा ऊपर फोकसिंग करा जाए बा नेटवर्क रे तार गोटे मुख्य भूमिका थाए क्वेश्चन ऑप्शंस आर स्विच रूटर ब्राउटर repeater and hop. Anyone can give the right answer? You can type the messages by chat. कहा को गोटे मूल इंपोर्टेंस दिया जाए? Anyone can give the right answer? The right answer is your hub. Hub means the center point, the basic point which controls the network devices. Next question for you. What type of web technology creates an online community where people can make statements and others can read and respond to those statements? Web technology रे कौन एमती तैयारी करा जाए जहा कि गोटे ऑनलाइन रे थिबा कम्युनिटी को बा मास पॉपुलेशन को स्टेटमेंट दवा पाई किछि मतामत दवा पाई हेल्प करे एबो रेस्पोंड भी जने देई परिबो तारो किछि रिप्लाई भी देई परिबो तो सेटा को एग्जैक्टली कौन कुआ जाए आई जर्नल पॉडकास्ट एएसपी ब्लॉग नॉन ऑफ द अबव एनीवन कैन गिव द राइट आंसर एनीवन कैन गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जितबले आमे कोनोसी नेटवर्क रे कोनोसी नेट कोनोसी मास कम्युनिटी रे काम करूथिबा एंड कौन से जिनसटा जहा कि आमको किछि गोटे स्टेटमेंट दबा बा निजस्व किछि रेस्पोंड दबा पई हेल्प करे एनीवन कैन गिव द आंसर राइट आंसर चैट बाय मैसेज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज द ब्लॉग तो ब्लॉग माध्यम रे साधारणतः जणे निजस्व रेस्पोंड बा स्टेटमेंट गुडा को प्रोवाइडिंग करि परिबो तमे सुनिथिबो ना केबे केबे this is the news blog this is the sports blog जहाँ भी हो से द्वारा ही किछि गोटे करि पारे जणे ओके व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई इन कंप्यूटर क्षेत्र रे ईडीआई रो माने कोन द ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इमेज ईमेल डाटा इंटरचेंज इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंटरचेंज नॉन ऑफ दीज ताले कंप्यूटर क्षेत्र रे ईडीआई रो माने कौन एनीवन कैन गिव द राइट आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी या ऑप्शन ई you can type the messages by chat anyone can type the message by chat which option is the right answer the option C is the right answer that is electronic data interchange option C is the right answer next question for you what is the use of inverted comma symbols in Microsoft Excel रे ये जो inverted comma गुडा को यूज करा जाए कितने बड़े यूज करा जाए allows you to make one reference or multiple cells located between two cells is used to separate arguments in Excel spreadsheet formulas it is an intersection operator for sum of two cells and none of these which option is the right answer you may give your response by chatting तमे response तमर chatting माध्यम रे देई परिबो ऑप्शन 12 रो कोटा होची राइट आंसर ऑप्शन सी that is the wrong answer option B is the right answer it is used to separate arguments in Excel spreadsheet formulas आमे सपोज केबे केबे देखिथिबा ना तो केबे केबे फार्मूला जतला आमे पुट करूथिबा सपोज कंडीशन गोटे पकेले जदी जनकर मार्क 60 ऊपर को रहे ताल तार फर्स्ट डिवीजन जदी जनकर 50 ऊपर को रहे ताल तार सेकंड डिवीजन जदी तार 30 ऊपर को अछि तार थर्ड डिवीजन एल्स
सी होची फेल जहाँ भी हो ये जो डिवीजन बाय ग्रेडिंग पकेला बेले आमे कंडीशन दो मन करे A1 अछि A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इन्वर्टेड कॉमा भीतर लिखिया पड़े फर्स्ट डिवीजन कॉमा दबाउ पड़े पुनी इफ A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 पुनी इन्वर्टेड कॉमा भीतर लिखिया पड़े सेकंड डिवीजन तो it is used to separate arguments in Excel spreadsheet formulas. Okay, next question for you. Which of the following shortcut key used to close the current window? एमानक भितर कोटा व्यवहार करा जाए करंट विंडो को क्लोज करिबा पाई गोटे विंडो ओपन अछि एंड सेटा को हमें क्लोज करिबा को चाहूचे तो एमानक भितर को ऑप्शन दा यूज करा जाए ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस F7 शिफ्ट प्लस F4 कंट्रोल प्लस F6 alt plus F4 and none of these. You may type the message. Which option is the right answer? Current window को close करिबा पाई. Anyone? Option E. Very wrong answer. Option D is the right answer. Alt सहित F4. Control सहित F4 मारिले गोटे फाइल बा डॉक्यूमेंट ता क्लोज हुए बट पूरा पूरी परमानेंटली ताको बंद कर दबा कोले परमानेंटली ताको क्लोज कर दबा पई हेले शॉर्टकट की हमें ऑल्ट सहित F4 यूज करू जे कोनसी एप्लीकेशन हमर फिटी थिबो एंड परमानेंटली तमे ताको बंद करिबा को चाहूथिबो ऑल्ट सहित F4 द्वारा हमें क्लोज करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट आर द प्रोग्राम्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट एज दैट सॉल्व a navigable windows into a web called Arch. What are programs such as Microsoft Edge that solve as navigable windows into the web called Arch? जेमति के Microsoft Edge गोटे एप्लीकेशन जहा को कि आमे यूज करि थाउ सेटा को कोन बोली कहवा जाय हाइपरटेक्स्ट वेब ब्राउजर्स इंटरनेट नेटवर्क्स विंडोज नेविगेटर टाइम टू टाइम तम पई मु बहुत बहुत टेक्निकल क्वेश्चन गुडा को प्रिपरेशन करूची जेंति कि तुमको जे कोनोसी रिलेटेड कंप्यूटर क्वेश्चन आसले दैट इज फील टू इजी तुमको बहुत इजी लागिबो तो मु कहिबा कथा एटा कोन एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट एज ऑप्शन ए हाइपरटेक्स्ट ऑप्शन बी वेब ब्राउजर्स ऑप्शन सी इंटरनेट ऑप्शन डी नेटवर्क्स and last option is Windows Navigator. Anyone can give the right answer? Give the response by chat. The right answer is option B, web browsers. आमे ए टिके कहि दउची web browser कोन when we open internet and use it जेतबे इंटरनेट को आमे फिटौचे and ताको व्यवहार करिबा आरंभ करूचे then we require an application to be installed in our computer or devices जे कौन सी डिवाइस रे हम इंटरनेट चलोइबा से मोबाइल फोन होई पारे लैपटॉप होई पारे डेस्कटॉप होई पारे हमें गोटे स्पेशल सॉफ्टवेयर आवश्यक करिबा दैट इंटरैक्ट्स विथ द वेब सर्वर एंड सेंड्स आवर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से वेब सर्वर सहित कांटेक्ट करी कि हमें कोन इंफॉर्मेशन चाहूचे सेटा हमको दबा पई चाहिबो ताले से जो स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ताकू आमे कोन बोली कहिथौ ना ताकू वेब ब्राउजर बोली कहिथौ तो से जो वेब ब्राउजर भितरे खाली जे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जो आछि एज ता नुहे बहुत उडे अछि मोजिला फायरफॉक्स ओपेरा नेटस्केप नेविगेटर गूगल क्रोम तो बहुत उडे कंपनी एमती वेब ब्राउजर डेवलपमेंट करछन तो वेब ब्राउजर इज दैट टाइप ऑफ थिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट एज जोडे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कला पर इंट्रोड्यूस करिछि ना सेटा होचे उडे वेब ब्राउजर ओके ऑप्शन 15 number question which among the following is a self contented step by step set of operations to be performed which among the following is a self contained step by step set of operations to be performed options are system software option B algorithm option C network topology option D application software and last option is utility software emanako bitiru kota one self contented program anyone can give the right answer make the response by chatting give your response by chatting
Which option is the right answer? Option B, algorithm. Anyone can give the right answer? Yes. Option B is the right answer. That is the algorithm. Algorithm means find the logical solution step to solve a problem. Step by step गोटे सॉल्यूशन रो मेथड को शो करबा को algorithm ही कहा जाए. जितले आमे कोनसी प्रोग्राम लिखिबा को चाहू ता पूर्वरु हमकु कोन करबा को पड़े ना प्रोग्राम को फाइंड आउट कला परे ता पई से लॉजिकल सॉल्यूशन स्टेप को डेवलपमेंट करिया को पड़े. दैट इज नोन एज द algorithm. एंड algorithm पर पिसिडो कोड तयार करिया पड़े. जहां भी हो सेटा परवर्ती स्टेप कथा किंतु मु कहबा कथा स्टेप बाय स्टेप केमिति से प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन हबो से मेथड ता जो डेवलपमेंट करा जाए दैट इज नोन एज ए algorithm. The logical solution steps of a problem, solving to logical solution step of a problem. Okay, next question for you. Which of the following is an intersection of row and column in spreadsheet? Which of the following is an intersection of a row and column in a spreadsheet? Options are formula, option B, worksheet, option C, address, option D, cell, and option is none of these. Which option is the right answer? Can anyone give the right answer? Give your response by chat. Give your response by chat. Which option is the right answer? The right answer is no. Yes. Option D is the right answer. That is cell. Cell is the intersection point of row and column. आमे देखिचे row heading जेमती 1 2 3 4 एक row heading पड़िथिबो, A B C D की column heading पड़िथिबो, and A1 that is the intersection point of 1 number row and A number column. So that cell is known as A1. So a cell is the intersection point of row and column. रो एवं कॉलम परस्पर को जोडी छेद करंती इंटरसेक्ट करंती सेटी गोटे सेल तयारी हिते. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ रूल्स कंप्यूटर्स यूज टू टॉक टू ईच अदर? एमान को भितरु कोटा सेट ऑफ रूल्स जहा की परस्पर सहित कथा हवा पई यूज करा जाय? ऑप्शन ए इज सिंटैक्स, ऑप्शन बी इज HTML, ऑप्शन सी इज DOS commands, option D is protocol, and option E none of these. एमानको भितरु कोटा से सेट ऑफ रूल्स जोटा हमें एथि पई यूज करू? एनीवन कैन गिव द राइट आंसर. कोटा हमरो यूज करथे कंप्यूटर जोटा कि हमरो बेसिकली एटा पई यूज करा जाय. एनीवन कैन गिव द राइट आंसर. The right answer is what? The right answer is syntax. The set of rules. Computer भाषा रे syntax माने the rules, the grammars. जोटा तारो रूल अछि बा ग्रामर गुडा अछि जोटा predefined सही बोली जिंस को syntax बोली कहंती कंप्यूटर भाषा रे. Okay. Which of the following topology have a central controller हब? एमान को भितरे को टोपोलॉजी रे हमरो गोटे सेंट्रल हब को कंट्रोल करि थाए? ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी मेश, ऑप्शन सी रिंग, ऑप्शन डी बॉस, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस. एनीवन कैन गिव द राइट आंसर. को थिरे गोटे टोपोलॉजी रो सेंट्रल कंट्रोलर थाए हब ता? ऑप्शन सी रिंग टोपोलॉजी. This is wrong answer. हमरो स्टार टोपोलॉजी रे एक्चुअली सेथिरे कोन हिथाय ना गोटे सेंटर हब रु अनेक गुडाए हमरो कनेक्शन हिथाय, अनेक गुडाए हिथाय. मूल पॉइंट एन थिबो अनेक गुडाए सेथिरु कनेक्शन हमरो बाहर थिबो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर इन एमएस विंडोज? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज रे शॉर्टकट की फोल्डर क्रिएशन करिया पे यूज करिबा. आमे समस्त जनरली गोटे फोल्डर क्रिएशन करिथाउ. मो मोर गीत फाइल गुडा को परा मो मोर फोल्डर क्रिएशन करी रखिबी. मोर वीडियो गुडा को मो फोटो गुडा को मो गोटे फोल्डर रे रखिबी. तो मु से जो फोल्डर ता क्रिएशन करिबी
से फोल्डर को तो जनरल वे रे समस्त जानि चंदी केंदी क्रिएशन हुए बट मु कहबा कथा बाय द वे शॉर्टकट की तो को शॉर्टकट की रे सेटा करा जाय ऑप्शन ए राइट क्लिक बटन प्लस W प्लस एंटर ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस W प्लस शिफ्ट राइट क्लिक बटन प्लस F प्लस एंटर राइट क्लिक बटन प्लस Q प्लस एंटर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N which option is the right answer anyone can give the right answer the right answer is option E कंट्रोल शिफ्ट N जदि बी माउस मोर खराब थाए चिंता करिवार नाही सिंपली कीबोर्ड रु कंट्रोल शिफ्ट N मारी देले मोर गोटे नुवा फोल्डर क्रिएशन हे जिवो एंड से फोल्डर जदि ना चेंज करिया चाहूतिबी सिंपली F2 मारी देबी से फोल्डर रे गोटे ना कीबोर्ड रु टाइपिंग कर देले भी ना चेंज हे जिवो कॉपी करिबा चाहूतिबी कंट्रोल सहित C मारी देबी ताकू पेस्ट करिबा चाहूतिबी कंट्रोल सहित V मारी देबी ताकू डिलीट करिबा चाहूतिबी सिंपली कीबोर्ड रु डेल की मारी देबी ताकू जदि परमानेंटली डिलीट करिबा चाहूतिबी शिफ्ट सहित डिलीट मारी देबी तो मो पाखरे माउस नथले भी चिंता करिवार नाही तो मु प्रश्न थिला फोल्डर केमिति शॉर्टकट की रे हमें करिबा तो लास्ट ऑप्शन बा ऑप्शन ई इज द राइट आंसर कंट्रोल शिफ्ट N प्रेस करले हमें गोटे नुवा फोल्डर क्रिएशन करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द फास्ट कंप्यूटर्स वे आर प्रोग्राम्ड यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज जेतबेले प्रथम होई कि कंप्यूटर आसिला को लैंग्वेज रो यूज करी कि सित्रे प्रोग्राम करा गला ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज ऑप्शन सी सोर्स कोड ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट कोड एंड ऑप्शन ई none of these which option is the right answer you give the answer as option D I think this is wrong answer फास्ट कंप्यूटर को जेतेबेले डेवलपमेंट करा गला मो एठी गोटे हिंट्स तुमको दे दूची फास्ट जेतेबेले कंप्यूटर आसिला सेथरे जे डेवलपमेंट भी कला ता मुंडर गोटे जिंस आसिला सब किछि 01 शैली रे लिखा जिवो सब किछि कोडिंग गुडा को 01 शैली रे करा जिवो आउ किछि कंप्यूटर बुझी परिबनी काईना से मशीन ता सेमथि ता आइडियोलॉजी से डेवलपमेंट कला तो जेहेतु 01 शैली बुझिबो 0 होची गोटे डिजिट 1 होची गोटे डिजिट एंड दीज आर टू डिजिट्स so the questions are the codes are written in binary language that binary language को से जो binary language को ताको otherwise हमें machine language बोली भी कहो तो machine language रे ही कोड उडा का लिखा जाउथिला कालक्रमे डेवलपमेंट करी असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज से परे परे आछि बट फास्ट जेतेबेले कंप्यूटर डेवलपमेंट करा जाइछि कंप्यूटर कांसेप्ट अनुसार सब किछि 01 शैली रे डेवलपमेंट करा जाइछला 01 शैली रे लिखिबा को पडुथिला नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एमानक भितरु कोटा गोटे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रो उदाहरण नुह ऑप्शंस आर बैकअप सॉफ्टवेयर ऑप्शन बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑप्शन सी डिस्क टूल्स ऑप्शन डी मीडिया प्लेयर्स एंड ऑप्शन ई all of the above are examples of utility software can anyone give the right answer can anyone give the right answer of that question एमानक भितरु कोटा गोटे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नुह सॉरी हां एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नुह ऑप्शन ई that is wrong answer anyone anyone can give the right answer yes no this is not doubtable मु तुमको डाउट करिवा पई पचारिली तमे कोन कहूछ एक्चुअली ए मानको भितरु मत लागुची सबुथियो गोटे गोटे होची यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमर सॉफ्टवेयर जो अछि ना दी प्रकार गोटेला सिस्टम सॉफ्टवेयर गोटेला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भीतर चारिटा प्रकार कैटेगरी तार अछि गोटेला जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गोटे स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गोटेला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ गोटेला डेवलपर टूल्स तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर गुडा का हमें कहूचे जेमति कि बैकअप करिबा पई एंटीवायरस भी गोटे होची यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिस्क टूल्स गुडा बा जो जमति डिस्क डिफ्रैग्मेंटर कहूचो डिस्क क्लीन अप कहूचो डिस्क ड्राइव रो अननेसेसरी फाइल गुडा का क्लीनिंग करिबा मास फाइल को
अधिका जगह को स्प्रेड न करिके ताको कंप्रेसिंग करिके जेतिकी जगह रखिबा कथा सेतिकी जगह रखिया ताको कोन डिस्क डिफ्रैगमेंट देन होची तमर गोटे मीडिया प्लेयर कोन दरकार किछि वीडियो फाइल म्यूजिक फाइल गुडा प्ले करिबा तो ऑल आर द अबव आर एग्जांपल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो फर्स्ट जोटा देइथिला ऑप्शन ई दैट इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू copying a process from memory to disk to allow space for the process is called copying a process from memory to disk to allow space for the process is called option A swapping, option B deadlock, option C demand paging, option D page fault and option E cloud computing. Anyone can give the right answer? Question number 22 copying a process from memory to disk memory to disk को copy करिबा process जहा कि फर्दर प्रोसेसिंग पाई और नेक्स्ट प्रोसेसिंग पाई अलाउ करे एक्चुअली सेटा को कोन बोलिया में कहिताओ एनीवन कैन गिव द राइट आंसर दैट राइट आंसर इज स्वैपिंग जनरली केबे केबे हमें सुनी थाउ स्वैपिंग माने होची अदल बदल या जिंस ताकू दिहाबो ता जिंस ताकू आसीबो तो ता भीतर को मते डिस्कशन करू नाही कंप्यूटर क्षेत्र रे भी सेया स्वैपिंग माने ए जगह आसीबो सेपट को फर्दर प्रोसेसिंग पई पुनी सेपट को ट्रांसफर हो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड टू फॉर असेंबली लैंग्वेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड फॉर असेंबली लैंग्वेज आमे जो कंप्यूटर क्षेत्र में बहुत गुडा लैंग्वेज विषय डिस्कशन करले मशीन लैंग्वेज assembly language, high level language, object oriented language, पीडीएफ टा मते दरकार पीडीएफ मिलु नहीं पीडीएफ मिली जीवो मो नेक्स्ट क्लास को तुमको पीडीएफ टा प्रोवाइडिंग करिवार व्यवस्था करि दोउची व्यस्त हो नाही पीडीएफ मिली जीवो बट वर्तमान क्लास रे अटेंड एंड आंसर दबा पई चेष्टा करो द ऑप्शंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम used for assembly language. Which option is the right answer? Option A, compiler. Option B, interpreter. Option C, translation. Option D, translator. And option E, assembler. Which option is the right answer? Anyone can give the right answer? एमानक भितरु कोटा assembly language को convert करिया पे यूज करि थाए Anyone? The right answer is option E, assembler. Obviously, assembly language को convert करिबा पाई assembler now. Option D not D is wrong answer. Option E is the right answer. That is assembler. Next question for you. What is the technical term for the devices connected in a network? गोटे network रे जो device गुडा को जो जिंस गुडा को कनेक्टेड हुए एक्चुअली ताको कंप्यूटर भाषा रे जो टेक्निकल टर्म ता कोहंती कोन कोहंती सेटा को हॉप्स नोट्स सेक्शंस अटैचमेंट यूनिट्स एक्सेस पॉइंट्स एनीवन कैन गिव द राइट आंसर गोटे नेटवर्क जेतबे फॉर्मेशन करा जाए एनी टाइप ऑफ नेटवर्क से नेटवर्क रे जो डिवाइस गुडा को कनेक्टेड हितांती बा डिवाइस गुडा को जो अटैचमेंट हितांती ताको टेक्निकल भाषा रे कोन बोली कह जाए anyone can give the right answer option C that is the wrong answer option B is the right answer ताको गोटोडे नोड बोली कहंती से प्रिंटर ही पारे मॉनिटर ही पारे जहां भी ही पारे ताको गोटोडे नोड बोली कहंती option B is the right answer nodes okay next question for you which of the following is the communication protocol that sets the standard used by almost every computer that accesses web-based information. Anyone can give the right answer? Question number 25. Which of the following is the communication protocol that sets the standard used by almost every computer that access web-based information? Web-based information पाई जो टर्म टा यूज हुए बा जो प्रोटोकॉल टा यूज हुए
जहा की कम्युनिकेशन करी थाए ऑप्शंस आर ऑप्शन ए XML, ऑप्शन बी DML, ऑप्शन सी HTTP, ऑप्शन डी HTML and option E option D. I think this is wrong answer. Option C is the right answer. HTTP, that is known as Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol कौन करी थाए ना हमर वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट नै वेब सर्वर पाके पहुंचाए पुनी वेब सर्वर रु यूजर रो जोटा रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन थाए सेटा आनी कंप्यूटर रे डिस्प्ले कराए ताले हमर से जो प्रोटोकॉल ता कहंती HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखिबो बेले बेले वेब पेज तमे फिटेला बेले जदी कोनोसी साइट पूर्वरु तमे HTTP लिखिबा भी दरकार नै किंतु ऑटोमेटिकली से पेज ता सर्चिंग वाला http:// पळे आस्तिबो so that protocol helps to searching web based information. Okay, next question for you. What is the attempt to acquire sensitive information such as usernames, passwords and credit card details and sometimes indirectly money by masquerading as a trustworthy entity in an electronic communication? Options are phishing, spoofing, option C identity theft, option D authentication and option E is the spamming. Anyone can give the right answer? कौन से जिनसटा जहा कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गुडा को जेंति कि यूजर नेम जानिबा पासवर्ड को जानिबा क्रेडिट कार्ड डिटेल्स गुडा को जानिबा पाई केबे केबे हमर यूज करा जाय जेंति कि सेटा इंटेंसली आइडेंटिटी नबा बा मनी रिलेटेड कौन सी फ्रॉड करिबा उद्देश्य थाए तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र रे बा इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनोलॉजी क्षेत्र रे एटा कोटा सुटेबल टर्म ता पाई ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी या ऑप्शन ई एनीवन कैन गिव द रिस्पांस गिव योर रिस्पांस बाय चैट एनीवन क्वेश्चन नंबर 26 that thing is known as what option A phishing ताको कहते phishing. Okay, next question for you. Communication channel is shared by all the machines on the network. Anyone can give the right answer? Communication channel is shared by all the machines on the network in option A broadcast network, unicast network, multicast network, internet protocol address and none of the above. Anyone can give the right answer? Question number 27. Anyone can give the right answer? Communication channel is shared by all the machines on the network. Communication channel जहाँ की network रे शामिल ही थे ताकु कोटा suitable टॉर. Anyone can give the response? कि आरो क्वेश्चन रा आंसर देई परिबो से कम्युनिकेशन चैनल को कौन बोली कुआ जाय क्वेश्चन नंबर 27 ताकू ऑप्शन ए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बोली कहंती ताले जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कहउछ दैट इज ए सिंगल कम्युनिकेशन दैट शेयर्ड ऑल मशीन्स इंफॉर्मेशन ऑन ए नेटवर्क गोटे मशीन जहा की नेटवर्क के शामिल थाए तारो इंफॉर्मेशन उडा को शेयरिंग करि थाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए डैश कन्वर्ट्स all the source code into machine code creating an executable file. A dash converts all the source code into machine code creating all executable file. Options are linker, option B assembler, option C compiler, option D interpreter and option E none of these. Which option is the right answer? Anyone can give the right answer? What? A dash converts the source code into machine code. आमर जिते बड़े सोर्स कोड माने प्रोग्राम रे लिखा जाय थाए तो सेतरे सब किछि लिखा जाय थाए इंग्लिश टर्म यूज करा जाय थे सिंबल्स गुडा के यूज करा जाय थे मैथमेटिकल टर्म्स गुडा के यूज करा जाय थे बट कंप्यूटर से गुडा किछि बुझी पारे ना कंप्यूटर बुझे तो केवल 0 and 1 ताले मोर प्रश्न होची ए जो सोर्स कोड रे लिखा जायथिबा प्रोग्राम को मशीन कोड को कन्वर्ट करिबा से एग्जीक्यूटेबल फाइल तक को एक्चुअली कोन कहंती ये तको ये करि थाए ऑप्शन ए लिंकर
That is wrong answer. Anyone can give the right answer? That is known as compiler. Compile करा जाए तुम बेले बेले सुनी थी वो इटा compile करा जीवा दरकार compiler रो काम होला से line by line extract करी चले अनुवाद करी चले 01 शैली को. Okay, next question. What is the term that refers to an ad hidden inside software that you download from an internet site? बेले बेले हिडन है कि थाए सेटा तुम भी समस्या देखी थी वो कौन से फाइल डाउनलोड कला बेले को सेटा हिडन है कि थाए तमर इंटेंशन न थी वो से फाइल को डाउनलोड करिबा बट से फाइल टा हिडन है कि थी वो ता सहित. व्हाट इज द टर्म दैट रेफर्स टू एन आड हिडन इनसाइड ए सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर सहित तमे गोटे सपोज कंप्यूटर तमरो गोटे सॉफ्टवेयर दरकार पड़े तमे ताको डाउनलोड करिबा को चाहू छ तमे एक्जेक्टली से सॉफ्टवेयर तमरो इंटेंशन अछि डाउनलोड करिबा किंतु देखिबो तमे डाउनलोड न करथले भी इंटेंशनली से आउ गोटे कोन गोटे डाउनलोड हो जाय तो मु कहिबा कथा से जो आड ता हिडन हे कि थाए ताको एक्चुअली कोन कहंती स्पैम cookie, face, adware, none of these. Anyone can give the right answer? Anyone? Actually सेटा को कहा जाए हार्डवेयर जेमति कि गोटे कोन छोटे बैनर कि कोन छोटे बेले बेले अलग अलग जिंस ए सब डाउनलोड हो जाए आमे डाउनलोड करि न थाउ से डाउनलोड हो जिवो. That is known as the hardware. The option D is the right answer. Next question for you. In PowerPoint, what is the function of Alt plus N in navigating ribbon with only the keyboard? Keyboard ru Alt सहित N जदि PowerPoint रे यूज करा जाए से navigation button रा बा से जो shortcut key रो कौन फंक्शन करि थाए? Open the transition tab, open the home tab, opens the insert tab, opens the review tab, open the tell me box. Anyone can give the right answer? जदि केबे PowerPoint रे Alt सहित N की को प्रेस करा जाए से Alt सहित N की को प्रेस करिबा द्वारा navigation pane रे कोन हे थाए? Anyone can give the right answer? ठीक आंसर दे परिबो की? Give your response by chat. Question number 30. Which is the right answer? Option C is the right answer. Insert tab open होता है. Insert tab रे प्रतिटी ऑप्शन एक्टिव हो जाता है. ताको को की मारी देले ठीक हबो. Yes, option C is the right answer. That is the insert tab को एक्टिव करता है. Alt सहित H होची home tab को एक्टिव करता है. Simply Alt सहित N होची insert tab को एक्टिव करता है. आपरे हमें साधारणतः कहीं केटा यूज करा जाए एटा भी जानिबा दरकार बेले बेले शॉर्टकट की हमर सब मन न थाए तो कोनोसी गोटे ऑप्शन कर काम करिबा को थिले कीबोर्ड सपोज हम पाखे अछि माउस ता नाही तो नेविगेशन पेन को हमका एक्टिव करिबा को पड़िबो कोन की मार देले हबो तो सेतळे ऑल से तो एन जदी तमे मारी दबो इंसर्ट टैब रो प्रतिटी ग्रुप रो प्रतिटी ऑप्शन कोन की कटा मारिया को पड़िबो से एक्टिव करी शो कर दबो. सो नेविगेशन पेन फॉर द इंसर्ट टैब is also the N. Option C is the right answer. Next question for you. Commands at the top of a screen such as file, edit, format and tools to operate and change things are incorporated in commands गुड़ा को जहाँ गोटे screen रो file, edit, format, tools ए बोली सब जिन सोड़ा था है ताको exactly कौन बोली को आजे menu bar, tool bar, user friendly, word processor and none of these. Option A, option B, option C, option D, option E. Which option is the right answer? Can anyone give? Anyone can give the right answer for this question? Option B, toolbar. This is wrong answer. That is known as menu bar. Yes, that type the response. Type the response. What about the response for you? That right answer is menu bar. सेटा को मेनू बार बोली कुहा जाए. Yes. Anyone can give the response for this question? That is known as menu bar. जोटा थाए सेटा को मेनू बार बोली कुहा जाए. Next question for you. Specialized programs
designed to allow particular input or output devices to communication with the rest of the computer system is called. Anyone can give the right answer? Special programs designed to allow particular input output devices to communication with the rest of the computer system is called. डिवाइस को कौन एक्चुअली कहा जाए जहा कि अलाउ करे गोटे इनपुट डिवाइस को बा आउटपुट डिवाइस को कम्युनिकेशन करिया पय अन्य कंप्यूटर मानक सहित. ऑप्शंस आर कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिवाइस ड्राइवर्स, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर्स, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लास्ट ऑप्शन इज योर नॉन ऑफ दीज. व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर? आमर एमिति कौन से जिनसटा डेवलपमेंट करा जाइछि जहा कि एटा को यूज करा जाय? इंटरप्रेटर. दिस इज रॉन्ग आंसर. दैट स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम इज नोन एज ए डिवाइस ड्राइवर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. काहे कि तमे देखिथिबो बेले बेले गोटे नुवा प्रिंटर ता आनिबो एंड कंप्यूटर रे कनेक्शन कर देबो, प्रिंट मारी देबो, से प्रिंट बाहरिबो नाही जे पर्यंत से प्रिंटर रो सॉफ्टवेयर ता इंस्टॉल न होईछि. प्रिंटर खाली नुआ आनी की कनेक्शन कर देले प्रिंटर होई परिबो नाही. तो सेही जो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर सेही प्रिंटर रो सेही मॉडल रो जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा जाए तापर प्रिंट बाहरे सेटा की कुआ जाए एक्चुअली डिवाइस ड्राइवर. से प्रिंटर रो सपोर्ट नबा पई सिस्टम रे बा से प्रिंटर ता कंपैटिबल होबा पई सपोर्ट तो कुआ जाए नि कंप्यूटर रे. कंप्यूटर भाषा जो टर्म ता हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर रिलेशन देखा जाए दैट प्रिंटर विल बी कंपैटिबल होबा पई हेले आमर तार डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करबा को पड़े. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. UDP and TCP are categorized under the dash layer of OSI model. OSI model रो UDP एवं TCP ओ लेयर रे थांती. ऑप्शंस आर डाटा लिंक लेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन सी नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट लेयर एंड ऑप्शन ई सेक्शन layer. को लेयर रे इटा थाए. Anyone can give the right answer? Give your response by the message. UDP and TCP को लेयर रे सेटा थाए. Anyone can give the right answer? सब बेले हमें चेष्टा करिबा जे ठीक आंसर दबा पाई. काहे कि ना बाय द वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे तमे जदि भूल आंसर भी दउचो माइनस मार्किंग ही जाउची. तो माइनस मार्किंग होबा सहित सेटा प्रॉब्लम. तो हमें यथा संभव चेष्टा करिबा ठीक आंसर दबा पाई. दिस इज द अप्रोप्रिएट मेथड. जदि हमें ठीक आंसर न दउचे सेटा माइनस मार्किंग ही ठीक गुडा का भी माइनस ही जाइथिबो. तो हमें भी चाहिबानी जे बहुत समय भी नहीं के आंसर दबा. गोटे क्वेश्चन सॉल्व अप्रोक्सीमेटली 37 टू 38 सेकंड भीतर हमु सारिया पड़िबो. 37 रु 38 सेकंड भीतर भी सारिबा को पड़िबो. ओके, तो राइट आंसर दिस इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट लेयर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. ट्विस्टेड पेयर वायर्स आर कॉमनली यूज्ड इन. हमर जो विभिन्न प्रकार केबल सब थाए. ट्विस्टेड पेयर केबल, ब्रॉडबैंड केबल, देन होची ऑप्टिक फाइबर केबल, जहां भी हो से जो केबल भितरे ट्विस्टेड पेयर केबल को कॉमनली को जगह रे यूज करा जाए. एनीवन कैन गिव द राइट आंसर? टेलीफोन नेटवर्क्स, केबल टीवी नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, बोथ ए एंड बी. ऑप्शन ई होची नॉन ऑफ दिस. एनीवन कैन गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ट्विस्टेड पेयर केबल कोठी एटा यूज करा जाए. Anyone can give the response? Option C, computer networks. No, this is basically suitable for the telephone networks. Okay, next question for you. Timing and control unit is a part of dash. It a kahar gote part? ALU, processor, option C memory, option D CMOS, option E BIOS. ALU arithmetic logic unit, CMOS complementary metal oxide semiconductor, BIOS basic input output system. तो मु कहिबा कथा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट कहार पार्ट. Anyone can give the response? This is a very technical question also, very simple question also.
एटा जानिबा भी हमर निहाती भाबे दरकार टाइमिंग आ कंट्रोल यूनिट टा कहार पार्ट this is the part of the processor. Okay, ALU is also a part, a specialized network device that determines the next network point to which it can be forward a data packet towards the destination of the packet is commonly known as a specialized network device that determines the next network point to which it can be forwarded data packet towards the destination of the packet is commonly known as. Options are bridge, option B, router, option C, switch, option D, hop, and last option is the repeater. Anyone can give the right answer? कौन से डिवाइस टा जहाँ की फॉरवर्ड करी थाए गोटे डेस्टिनेशन को माने इजीली गोटे नेटवर्क रु आ गोटे नेटवर्क भीतर को इजीली ट्रांसफर कर दे थाए तो सेटा कौन टा सेटा एनीवन कैन गिव द राइट आंसर दैट थिंग इज नोन एज योर रूटर रूटिंग कर दे थाए तार डाटा टा को बा पाथ टा को ट्रांसफर कर दे थाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू a database that spreads information across different tables while maintaining links between them is referred to as database रे जेतेबेले इंफॉर्मेशन गुडा को शेयरिंग करा जाए डिफरेंट टेबल्स भीतर हम जानि छे जे कोन सिद्धरे डाटाबेस करा जाए से एसक्यूएल हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो जहां भी हो तो डाटाबेस रे जेतेला हमर करा जाए टेबल फॉर्मेट रे करा जाए तो से कहबा कथा ए जो लिंक्स मेंटेन करा जाए टेबल मानक भितरे बा रिलेशन भितरे सेटा को कोन बोली कुआ जाए रिलेशनल डाटाबेस ऑप्शन बी रोटेशनल डाटाबेस कनेक्शन tabular database none of these anyone can give the right answer anyone can give the right answer of this question जेतबळे हमर गुटे टेबल को लिंक रखी आउ गुटे टेबल सहित काम करा जाए हम बेले बेले देखिथिबो गोटे डाटाबेस रे किछि डाटा एंट्री हिची नेक्स्ट बेले को मन को नेम गुडा को धरि ने जो मो तले नेक्स्ट एंट्री करिवि हां एस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यू गिव द राइट आंसर relational database actually ताको relational database कहंती so Microsoft Access is an RDBMS is a RDBMS relational database management is you also give the right answer option A is the right answer ताको कहंती relational database तो Microsoft Access को गोटे RDBMS application software मध्य कहंती जोटा कहंती relational database management system आमे जो Access हो बा जेकोनसी database रे information को स्टोर करिताउ टेबल माध्यम रे करिथाउ एंड टेबल को डाटाबेस भाषा रे अदरवाइज हमर रिलेशन बोली भी कुआ जाय टेबल रे थिबा प्रति धाडी गुडा को गोटे गोटे रेकॉर्ड बोली कुआ जाय डाटाबेस रे एंड प्रति कॉलम गुडा को गोटे गोटे फील्ड बोली कहंती एवं यूनिक आइडेंटिफिकेशन मॉडल को प्ले करिया पई की रो असाइनमेंट करंती ए जो टेबल को रिलेशन बोली कहंती रो गुडा को अदरवाइज हमर ट्विपल बोली भी कहंती रेकॉर्ड बोली भी कहंती सेंते कॉलम गुडा को अदरवाइज हमर फील्ड बोली भी कहंती एंड एट्रिब्यूट बोली भी कहंती एवं जेतेडा रो थाए ताकू कहंती हमर एट्रिब्यूट सॉरी ताकू कहंती हमर व्हाट ताकू कहंती कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री बोली कहंती जहां भी हो ठीक आंसर कहिछ तमे रिलेशनल डाटाबेस मल्टीपल टेबल भीतर रिलेशन रखे व्हाट डज SNMP stands for SNMP माने कोन बहुत गुडा जिंस हमें SMTP TCP बहुत जिंस डिस्कशन करी छे बट SNMP रो माने कोन सिंपल नेटवर्क मेल प्रोटोकॉल सिंगल नेटवर्क मेल प्रोटोकॉल सिंगल नेटवर्क मैसेज प्रोटोकॉल सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल none of the above anyone can give the right answer option B I think this is wrong answer. Option A, that is also wrong answer. Option D is the right answer. Simple network management protocol. Simple network management protocol. SNMP.
SNMP. Okay. Option D is the right answer. Next question for you. What is the common name given to a program written in any one of the high level language? So common name ta kono gote program jaha ki high level language re lekha jai thai. Options are system program, option B compiler program, option C object program, option D source program, and option E data program. Anyone can give the right answer? What is the common name given to a program written in any one of the high level language? Can anyone give the right answer? What is the right answer of this question? Common name टाको actually कौन बोली कहती? System program, compiler program, object program, source program, या फिर data program. Anyone can give the right answer of this question? The right answer is your what? Our option B, that is the source program. मूल program टा जो लिखा ही था सेटा को source program बोली कहती बा source code बोली कहती. Okay, next question for you, and also the time will be to be over. Okay, this question for you: for predicting the weather, which of the following is the best solution? For predicting the weather, which of the following is the best solution? Weather amara predicting करिबा पई weather टा केमिति कोन रहिबो तार गोटे आकलन करिबा पई amara emanako bituru कोउटा गोटे बेस्ट सॉल्यूशन. ऑप्शन ए 3 क्लाइंट्स, ऑप्शन बी सर्वर्स, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी वर्कस्टेशन, ऑप्शन ई मिनी कंप्यूटर. Anyone can give the right answer? Is you have give the right answer, that is option C super computer. amara basically mo iti tike कहि दोची तले कंप्यूटर कथा आसीची. amara कंप्यूटर को बेसिकली तीन भाग में विभक्त करा जाए. गोटे हला साइज अनुसार, गोटे हला पर्पज अनुसार, आ गोटे होची तार व्हाट जोटा कहती वर्क अनुसार. गोटे साइज अनुसार, गोटे वर्क अनुसार, गोटे पर्पज अनुसार. साइज अनुसार कंप्यूटर चारि प्रकार: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम बा लार्ज कंप्यूटर, आ हला सुपर कंप्यूटर. सेमती जदि वर्क अनुसार देखिबा कंप्यूटर होची तीन प्रकार: एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड. एवं जदि पर्पज अनुसार देखिबा कंप्यूटर होची हमर दुई प्रकार: गोटेला जनरल पर्पज कंप्यूटर, आ गोटेला स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर. जस्ट टिके टिके मु कहि दोची. तो माइक्रो कंप्यूटर को बेसिकली हमें होम ऑफिसेस रे यूज करू. डेस्कटॉप, लैपटॉप, क्रोमबुक, अल्ट्राबुक, एवडा सब गोटे गोटे माइक्रो कंप्यूटर उदाहरण. मिनी कंप्यूटर स्मॉल इन साइज but the memory capacity is better than the micro computer. तार आकार छोट ही पारे but memory capacity टिके अधिक. सेमती जोटा कहउछ हमर मेन फ्रेम बा लार्ज कंप्यूटर बेसिकली लॉन्ग एवं क्रिटिकल एनालिसिस गुडा ता भीतर करा जाय. एंड सुपर कंप्यूटर जो तरे कि जंदी कहली वेदर टेलीकास्टिंग, एटॉमिक पावर रिसर्च, ए सब जिनसोडा करिया पई सुपर कंप्यूटर यूज करा जाय. सेमती एनालॉग कंप्यूटर जानिछो कोन सी फिजिकल चेंजिंगनेस डाटा एबे थिबो किछि मुहूर्त चेंज हिजिबो सेही प्रकार डाटा गुडा को मेजरमेंट करिया पई यूज करा जाय. जेमति कि गोटे थर्मोमीटर टेंपरेचर को मेजरमेंट करे, स्पीडोमीटर गाड़ी रो जो स्पीड को मेजरमेंट करे. गाड़ी रो स्पीड अधिका बढ़िबो तो स्पीडोमीटर अधिक देखैबो, स्पीड कमिबो तो स्पीडोमीटर कमी जिवो. देन होची हमरो जोटा कहंती वोल्ट मीटर, वोल्टेज को मेजरमेंट करिया पई यूज करा जाय. सब गोटे एनालॉग कंप्यूटर उदाहरण. एनालॉग कंप्यूटर मेजर्स फिजिकल चेंजिंगनेस डाटा कंटीन्यूअसली एंड कन्वर्ट्स देम इनटू क्वांटिटीज. देन असला डिजिटल कंप्यूटर. एथिरे जहां भी तमे दियो नंबर, लेटर, सिंबल, ये कंप्यूटर किछि बुझे ना, सबु किछि को शून्य को कन्वर्ट कला पर ही बुझी थाए. नंबर, लेटर, सिंबल्स को. सो जीरो जेहेतु गोटे डिजिट, 1 जेहेतु गोटे डिजिट, एई दीटा डिजिट को नै कंप्यूटर सबु किछि काम करता है. कोडिंग सिस्टम भी तार सही बड़ी सेथि पई ताको हमें डिजिटल कंप्यूटर बोली कहिताउ. एंड लास्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर होची तमरा कोन जोटा कहिला हमें हाइब्रिड कंप्यूटर. एथिरे एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दीटा जाको विशेषतः मिसी के देखिबा को मिले. जेमति कि तमे कहउछ जोटा हार्ट लंग मशीन्स यूज्ड एट हॉस्पिटल देखिथिबो. पेशेंट आगे पड़ीथिबो हार्ट लंग मशीन, पेशेंट बंची जे तो से जो लाइफ लाइन ता चलीथिबो, पेशेंट मरी गला चलन हार्ट लंग को मेजरमेंट करूछ बट डिजिटल कंप्यूटर भली चालूछ. सो दिस इज ए हाइब्रिड कंप्यूटर. अल्ट्रासाउंड होउछ हम पेट भीतर कोन ओडा ही जाउछ, मु गली अल्ट्रासाउंड कली, अल्ट्रासाउंड को करूथिबा जो कंप्यूटर
गोटे हाइब्रिड कंप्यूटर उदाहरण आउ सेमती जनरल पर्पज एवं स्पेसिफिक जनरल पर्पज माने जो आम बहुत गुड़ाए कम करूँ वर्ड प्रोसेसिंग करूँ एक्सेल कम करूँ प्रेजेंटेशन करूँ एक्जाक्टली सेमती आम स्पेशल पर्पज माने जो निर्दिष्ट कम होता है जमीक एटीएम मेसीन पैसा थोड़ा डिपोजिट करवा ये सब जिन करवा ओके द टाइम इज very short and this cannot give us permit to proceeding onwards समय बहुत कम थिबा जो आगु को हमें आउ जाई पारु नाही तो आहुरी भी इंटरेस्टिंग जिंस गुडा को अछि मो नेक्स्ट क्लास को तम पई से क्वेश्चन गुडा को धरि के आसीबी तो आई थिंक दिस क्लास will be helpful to you and thank you for joining this class.